Hello friends. Today's class is a bit advanced, okay? So it assumes that you have a reasonable experience of React, and it will try to solve some of the problems you face while developing in big teams, when you are developing huge projects, right? And when there are lots of team members in a project. So this will solve a lot of problem and we'll be doing everything from scratch. So I don't assume any prior knowledge of the technologies that we'll be using today. So today we'll be exploring two concepts. One is of styled components in React, and second is Storybook. Okay, so I'll go to Storybook first. So Storybook has a really nice, website with documentation and everything. And so let me open one of the storybooks. So for example, Strapi. In the last masterclass, we discussed about Strapi. Now, lot of open source development is happening around Strapi. Okay. And there are lots of components, standard components in their admin UI. So they have documented everything in Storybook, which is live, and someone who is developing for the first time, they can see, oh yeah, so the base button looks like this. Button has two variations, small and large. They have these many variants, secondary, tertiary, success, danger, success light, all at one place. Okay, so there can be button with icons. So once code becomes very big, it's very hard to figure out what all components are already built and are ready to be reused. And variations keeps adding. So what Storybook does is it acts as a central live, so as to say, design system or a style guide. And it is done, believe me, with very minimal effort. Today we'll see how easy Storybook makes it for us to document any of our components. Just look at this button, it has so many permutation combinations, right? So many variations. And if you multiply all of them, like suppose variants, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variants. If you just multiply it by size, it's a big number. If they are all disabled, it's another huge number. So it's very, very useful as the project gets larger, as the team gets larger, as you onboard new team members. Else what happens that you already have an icon with button, and you also have this ability that icon can be towards the start, towards the end of the button. So this is already done. But as the new developer don't know, as they don't know, this component already exists, they end up building one, right? And ultimately, the whole code base becomes a mess. So what this particular, tool, which is just give me a second, friends. I'll select the correct microphone so that the sound is clearer. Yeah, now you will find the sound to be much more clearer. Okay, so I have changed the microphone and I'm sorry for that. Thank you for letting me know that the sound was, not what it usually is. But still, I hope that even though the sound quality was bad, you were able to get the importance of Storybook, right? So here you see that you have this menu called Docs, or a tab called Docs, and if you go to Docs, you see you have all the information. They have all the information that is required to use button in our own component. Okay. So they have given us all the information that is required to
use the button in our own component. So we have a default button, okay? And how to use it? We need to import it, and we can just copy the code and we are good to use it. How to use the small and large button? All we need to do is we need to pass in prop size. If we pass in S, we get small. If we pass in L, we get large. If there were no storybook here for Strapi design system, just to figure out the variation of buttons, it would have taken a good amount of time, right? And if the developer was a junior in an inexperienced one, it would have taken them a lot of time and and a lot of frustrations to figure out all the variations. See, similarly, you can see that they have given code to how to use different variations and a very nice description. For an icon, we just need to give end icon and pass in an icon. For start icon, we just need to pass in a prop called start icon and we get a start icon. So simple, right? So as the project gets larger, as the team gets larger, these type of style guides, documentations is very important. But if it's very hard to build documentation, it takes as much time as it takes to build the component, then it's not practical to maintain it from the developers and from the company who is developing their point of view. But Storybook will see that it makes it super, super easy. Okay. And before going to Storybook, we'll be looking at this thing called styled components. We all know primarily the 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 value of styled component. It gives us all the power of JavaScript, all the power of JavaScript in CSS. Okay, and it makes sure that the CSS does not leaks outside our component. So everything is together in one place. For example, in our example, we'll look at button. So all the styles related to button are inside the button component, and we are able to use the full power of JavaScript, JavaScript loops, JavaScript expressions like ternary operators, etc. And we have that entire flexibility within CSS. I think many of us thought that it would be so good if we have the power of JavaScript inside CSS. To certain extent, SAS gave us that sort of power, but this styled components simply takes it to another level, and we will all experience that. Okay, so what we'll do is we will start from some very basic traditional way of creating application. Okay, and we will write CSS. We will basically just copy paste CSS to save time, and then we will refactor them to use then we'll refactor them to use styled components. And then finally, we will implement Storybook. And the end goal is that for today's lesson is that we want a style guide similar to Strapi style guide, so that we have all the variations of the buttons documented in one place, right? So even if they want to play around with it, like how the secondary look, they have this nice UI. They can go to the buttons and experience the power of Storybook. Amazing, isn't it? So this is something that we will be developing today within 2 hours. Okay, so pay very close attention and just enjoy the flexibility and power of styled components and Storybook. Okay, for some of you who are getting used to this concept for the first time, it may be a bit a lot of concepts for you maybe, but the recording is always with you. Just watch it again and things will start making a lot of sense to you. I'll expect all of you to be able to create everything that I am creating today from scratch. Okay,
So that is the end goal that we are aiming for. So what I'll do, friends, I'll just save my work that I've done so far. So this I created for all of you, this example, just like half an hour ago. So what I'll do is I'll just save it. I'll just open a new terminal, or maybe I'll stop the Storybook server. Okay. And what I'll do is I'll just commit everything that I've done so far. Okay. And I'll create a new branch so that I have all of my past work in case we get stuck somewhere. In live coding, it always happens. So we'll git checkout to a new branch, and we'll name this branch for live session. Okay. Now what I'll do is I'll get rid of the stories.jsx that you see. We will write it from scratch so that there is no doubt, you all completely get it. Okay, so I'll just delete it, friends. Then I'll go to button.js and I will get rid of all of these. Okay, I'll get rid of all of these. Now we will be creating things from scratch. So in order to create a button in React, okay, forget about styled components for a moment, forget about Storybook for a moment, okay? So we just need a couple of, imports. I'll do them. And I already have this, typical CSS style sheet where I have some base styles. And then depending on the modifiers, so I have these. So if we have this particular class in our button, it gets a different color and background. And if it has this particular modifier in our in our button or the component, we get a different font size and a different padding. Okay, this is simply it. And in the app.js, we have just included the button. So this will also change. This will also change. I'll just need a label here for the moment. Okay. And in the button, again, we'll go to the notes that I've created for all of you. And I will simply copy paste it just to save some time. Okay. This is simple plain React. Okay. We have done several sessions on React so far. So I don't want to spend time here. I want to spend major time in refactoring it for styled components and Storybook. So friends, we have a very simple, component called button starting with capital B. And it takes in a couple of props, primary. That primary is a Boolean. So it's expecting true or false. A background color, which can be any string. And size. Size can be one of the three, right? It can be either small, medium, or large. A label. Label can be any string and it's required. And any other props, like children or anything, if they are passed, they will be included in the button. Simple. And we have supplied it some of the default values for the props. So far, it's just plain simple React, okay? Here, what we are doing is, if primary is passed, okay, if there is any value, any truthy value passed to primary, then this mode turns into this particular string. If
primary is not passed, then this mode variable turns into gets this particular value. Okay. And what we are returning is a normal button with type of button. It has a default class name called Storybook button, and mode, depending on what comes for primary, it gets a mode. And depending on the size that is passed, it gets this Storybook button dash dash small, medium, large. Okay. And then, we do all these ugly joins in order to, make them a string separated by a space. Again, we are giving it a bit flexibility that they can style the background. If background is passed, only then it will be getting these background color. Okay. And then label is its children, which will be displayed. So now, of all of these props, label is only the required prop. And here in the app.js, I have already supplied it a label. So I'll save it. And if we go to localhost ://3000, I am sorry. Just :3000, because the port is 3000. You see a simple button here. Now, in this normal setup, right? If you want to, see what different variations are, or if you want to showcase to someone, right? Showcase to the client what different variations are. Typically, you will do this, right? You will call this component somewhere, and then you will pass in different props. So for example, I will then pass in a prop of size small. Okay. So size small. And you'll see that the button becomes small. Or maybe what I'll do is I'll keep all of them. Okay. So in one, we had no size, or maybe medium, small, large. Okay. So in order to demo the button to our client, or in order to experiment ourselves, we'll need to do something like this. And we will get to know that this is the size of a medium button, this is the size of a small button, and this is the size of a large button. This is the only way, right? Without Storybook, this is the only way. Now, there are some other variations that we want to test or showcase. Background color, let's ignore, okay? Because it's simple that we can pass in any string of any color there. So let's ignore that. Next is primary. So by default, primary is not applied to any of these, right? So they are all secondary. So now what we can do is we can just copy it again, and I'll get rid of size, and then I'll pass in primary. That means I'm basically saying primary is true, okay? So we'll see that it gets some background color. And do we have any other variation? Size we have seen, primary we have seen, and background color is simple, we don't want to see. So you are already experiencing the problem with the traditional way of building components, right? It was easy for us to build, nothing, spectacular, but it was very hard to showcase it. In order to just demo the 4 variations of button, or to figure out 4 variation of buttons, we had to run the entire application. But if we have something like a style guide, in order to showcase a button, we don't even have to run the entire application. There is minimal dependency, right? So that is a very powerful thing. Now let's first convert this to styled components so that we can experience the power of styled components. Okay. And then we'll move to Storybook thing. So until now, what I have done is I have created a fresh React application, nothing special. And I have just installed styled components using yarn add styled components. Okay.
So in the styled components, you can see we have lots of nice documentation and installation is given here. Styled components. So I prefer Yarn, so that's why I've used Yarn. If you use NPM, please feel free to use NPM. Now, we started the app and we created a button component, okay? In a traditional way, in the way we do normally things in React. Now what we want to do is, we want to refactor our component to styled components. And we want to utilize, first thing we want to do is, we want to get rid of this button altogether, the CSS altogether. We don't want this. We want to move these ugly logic out of our component. We don't want any of these logic inside our component. Okay, we want to clean up our component a lot. We want to move it outside. Okay, and maybe we have some JavaScript utilities that we want to use. Okay, and yeah, so this is our only target right now. So first, what we'll do is we will create some utilities. We can create these utility functions below the component as well. So we'll create some utility functions. Utility functions. Okay. Utility function. Utility functions. Okay. So I have written them for you just in favor of saving time, friends. So first utility function that we have written is get font size. So what it does is, it's a simple JavaScript function. It takes in a size. Okay, size can be small, medium, or large, and it returns a number which is going to be the font size for this particular, size. So if the size passed, if nothing is passed in the size, 14 is by default. If small is passed, we get back 12. If medium is passed, we get back 14. If large is passed, we get back 16. If anything other than these three is passed, it's a truthy value, but not medium, small, or large, then we are returned 14. Okay, so a very simple utility function, get font size. So we'll write a couple of more utility functions and very similar. Again, it's JavaScript, and I hope you are already starting to experience the power of styled components, right? We can be in our JavaScript zone and utilize all the power, all the if-else conditions, right? So now the second utility function is to get padding. Okay, and the name of the function is get padding. It takes in a size, and depending on the size, it returns different set of paddings. And this list can be any long. Okay, there is like infinite possibilities. Whatever you can do inside JavaScript, you can do inside here. You may maybe do a huge calculation and do a lot of computation, and depending on some value, return this. Basically, this is to showcase you that it's a normal simple JavaScript function, and whatever you can do inside JavaScript, you can do here. Okay, maybe depending on the length, you have to calculate some type of paddings or whatever is required, you can do that here. So this is our second utility function, get padding. It takes in a size and gives us back a padding. Then another utility function that I wrote for you, and I did this like half an hour before our class, right? So that we don't have to do all these typings in live, in a live session. So another utility function that I wrote is get background color, and it takes in a mode. Okay, if the mode is primary, it gives us back a shade of blue.
If it's secondary, it gives us white. If it's gold, it returns gold. These were not even there in the original example. I have included it here because it was so easy, just an if-else condition. And if it's pink, it was pink, then we return a shade of pink. As simple as that. So get background color, takes in a mode and returns a background color. Next, get color. Okay, so I'll copy it. There is no point that I'll type all of these in front of you, right? So I am, again, we have another function called get color. Again, it takes in a mode. If the mode is primary, the color returned is white. If it's secondary, it's black. There are dozens of ways in which this can be done. This is my preferred way of doing. Okay, and this is a good place to get started. Okay, this is a very reasonable way to get started. And it's perfectly fine if this is used in your live application as well. It's perfectly legitimate way of doing styled components. So we have created a couple of utility functions that takes in either size or mode and gives us back either font size, padding, background color, or color, right? And these are regular JavaScript functions and with infinite possibilities. Okay, so whatever the value is, that can be calculated based on a number of factors. Now, what styled component uses or utilizes is something called a tagged template literal. We all know that this is a template literal, okay? Something that starts and ends with a backtick. And if you see anything directly in front of the backtick, the first starting backtick, just understand that it's a function, okay? This is a function which will get all of these things inside it as arguments. It will get all the static text. It will get all the interpolated text. Everything it will get in nice different arrays. Okay. So styled component makes use of these tagged template literals. Second thing that you will experience is that styled components basically takes in CSS exactly the way we write CSS. In fact, we will simply be copy pasting our CSS from here. Okay, we don't need to do it camel cased or anything. It is exact style that you write in CSS along with the possibilities, along with the power to interpolate, or JavaScript inside of the CSS text. Okay. And it takes in either an existing React component or a native HTML element and gives us back a React component, which is styled using these CSS. Let's write it so that it makes a bit more sense to us. So here what we'll do is, right now in this particular file, we have just one React component called button, which we are exporting, right? But now what I want to do is, I want to create a styled button. It can be any name, okay? I chose to give it this name. It can be any name. And it will be styled. Style will be important from styled components, okay? Dot, then the HTML element that we want to style and use, and then the backtick starts. So basically this becomes tagged template literal function, okay? Now here inside this, we can pass in our base style as it is. So what I can do is I can simply copy this and I can simply paste it. Again, I'll repeat once for someone for whom this
way of writing CSS is absolutely new, complete beginners. We are taking a button, HTML button element, giving it all of these styles, and we are getting a brand new React component with these styles applied. As simple as that. And now, instead of using the button here, we were returning a button here previously, right? Now we can return the styled button because it's a normal React component which the styled component library created for us. And again, if you read the name carefully, styled components, right? So it takes in a component or an HTML element, styles it, and gives us back a React component. So it's a styled React component. Now here what we can do is we can now get rid of these class names altogether and this background color altogether for now. Okay, so I'll get rid of these and I'll save it. And if we check, we'll remove all the variations for now. Okay. And you have one simple button, nothing more. Again, what have we done so far? What we have done is we have taken a button using the styled object provided to us by styled components. We returned a styled component here in the variable styled button. In this button, we don't even need this ugly piece of logic here. We'll see how to manage all of these. And we can already see that our our component is getting more and more, fine-tuned. And I'll save it. And yeah, it's showing me some warnings that these functions we have never used, but don't worry about that. We'll use them very soon. And we have a nice and simple button. Simple so far. Okay. Now, the next ability that we want our clients to give is to pass in modes, and we want them to be able to do this kind of a thing. Okay. Um, So what we want them to be able to do is they should be able to pass in mode, and that mode can be either primary. I'll just copy this to save some time. It can be secondary. It can be gold. It can be pink. Okay. So this is the capability that we want to give to our user. These are the variations that we want to make. So in the button, we will do a little bit of refactorings. We don't need background color anymore. So we'll just get rid of it. And I'll just copy paste this size, or we don't even need to copy paste it. So what I now need is a mode. Okay. And that mode can be either primary, it can be either secondary,
It can be either gold or it can be pink. So these can be one of our modes. And here in mode, the default mode we will give is going to be primary. Okay, simple React here. In the prop types, we are telling that the mode should be one of these, and the default mode should be primary. Okay, we are communicating it to the React. Excuse me, friends. Now, if you'll see our function, depending on mode, depending on mode, we are setting background color and color. Okay, so how we do this, again, I have documented all of these in the sheet. So what we do is we go to color inside the styled component. We have to give it a color. Okay, and we can give it any color. For example, I can give a string value of a shade of blue. Okay, and if I save it, I don't need background color here. I just need mode, size, and label here. Okay, so now we have a couple of things here, and its color I give it blue. If I give it a background color of green. Okay, so that was the problem. So we can see that we can give it whatever values we give in normal CSS. Okay, but now we want the color depending on the mode prop given, right? So it's really simple. What we can do is we can, inside template string, if you want to write JavaScript, we do it this way using a $sign and opening and closing curly brackets. And then we get props here. We get access to all the props here. And depending on the prop, I'll call get color function and pass it in props dot mode. So basically, inside props, we will get the mode that is passed here. Okay, we will get the mode here that is passed here. We'll get the mode that is passed here. And depending on the mode, we will set the color. Okay, similar thing with background. Again, I mean, when I saw this for the first time, I was like, wow, you have all the capabilities of uh, of JavaScript within CSS. So props dot background color, props dot mode. So depending on the mode, we are getting the background color. Depending on the mode, we are getting color. Okay. Now let me save it. And you will see that all of them are blue in color and white color with the blue background. Now here, we are passing in mode, primary, secondary, gold, and pink. And depending on the mode, we are getting back some color.
right? This is the way. Props.mode. Absolutely perfect. And if the mode is primary, we are expecting a return of Dodger blue. If the mode is, let me just refresh it once to be 100% sure. And if I inspect it, do I see a console error? No. And all of them are essentially getting the same color. Now we need to debug it. Good. Live session, live debugging. So let me do one thing. Let me here, let's see if I can pass in multiple lines. Since it's a template string literal, so I doubt. So what we'll do is, I'll do is console.log the props. Okay. So I'll just console log the props. And if I inspect it, so I get back props.type as button. Children, we get theme, but we don't get mode. We don't see mode anywhere. Okay, so yeah, we can even debug CSS just the way we debug JavaScript. So somehow I don't see mode here. So yeah, this is the problem. To the styled components, we need to pass on. No? So we need to pass on the mode. And to size, we need to pass on the size. And now we can see that in the in the console log, we have mode everywhere, right? Mode. We have the mode and we can see the proper things getting applied now. So here again, we will revert it back to get color and we'll pass in props.mode. Again, nothing is stopping us from destructuring mode here, okay? Just to keep things simple, I'm using this traditional dot way. And we see that, you know, everything is looking exactly as we want it. And you can already see that, you know, our component is so much neat and clean. And the JavaScript logic related to style is here in the styled components. And we have simple utility functions that take care of most of the things. Now the next utility functions, if you see, is we need to set font size and padding depending on size. Again, it's very simple. So font size is going to be, again, we'll write some JavaScript inside CSS and it will take props and we will call get font size and we will pass it props dot size. Okay, so depending on if it's large, medium, or small, it will get its font size. And similarly, padding. We'll again write some JavaScript. We will give it a function. Function will get all the props and we'll set the padding depending on the size that we pass on to the props. And now you'll see that they are all medium sized. And if I make some changes here,
So for example, here, if I make it size equals large, and here size, again friends, it has started to rain heavily here. So in case my internet gets disconnected, just be with me. I will make sure to connect using one of the many backups that I have. Small. So gold should ideally be small, and pink is now large. Okay. So we have, if you want to, drastically see some drastic change, so make some drastic CSS here. So in the get font padding for large, maybe make it 16 and 32. Save it. Now you'll see a dramatic change when we go from medium to large. So friends, this is the absolute minimum styled components that I want all of you to know. Okay. Once you are comfortable doing this, once you are comfortable creating a styled component, writing some CSS inside it, making power of JavaScript expressions, to calculate color, background color, font size, padding, depending on props. I mean, this is almost like a dream come true, right? So you have access to props in your CSS style. And depending on props, you can write whatever logic you want here. If there were just two options, you could have easily used something like a ternary operator or a or a double ampersand. So this is styled components, and their documentation is absolutely fantastic. In the last couple of classes, I've been trying to teach you how to go through the documentation and make most of documentations, right? So once you are comfortable with it, go through the documentation so that so that you have you have a very good understanding of styled components. We'll take a short break, and immediately after the break, we will move to storybooks. Okay. So this was styled components, the bare minimum styled components that you need to know. And then now we will be moving to Storybook immediately after the break.
लास्ट सेशन ब्रेक से पहले हमने कंप्लीट कंपोनेंट को रिएक्ट कंपोनेंट उसे हमने स्टाइल्ड कंपोनेंट से बिल्ड किया द स्टाइलिंग्स फ्रॉम CSS to the component itself, and now we can safely get rid of the CSS file. स्टाइल जो आ रहा है हमारे स्टाइल कंपोनेंट से, और जो भी लॉजिक हमने लिखा उसके अकॉर्डिंग सारे स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्टोरी बुक। ओके, सो स्टोरी बुक इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड है npx sb init। ठीक है, जब आप npx sb init करते हैं तो ये केवल कुछ नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं करता, बल्कि आपके प्रोजेक्ट में काफी सारे चेंजेस करता है। इसलिए ये जरूरी है कि sb init आप क्रिएट रिएक्ट ऐप करने के बाद और स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने के बाद आप इंस्टॉल करिए। ठीक है, सो ये कमांड मैंने ऑलरेडी रन कर दिया था, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आप जब ये रन करेंगे कमांड, आपको क्या मिलेगा, एक तो डॉट स्टोरी बुक आपके लिए एक फोल्डर क्रिएट होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर। उसके अंदर दो फाइल्स आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे, एक जो कि काफी सारे एड-ऑन्स आपके लिए ऐड करेगा। एड-ऑन स्टोरी बुक को एनहांस करने के तरीके होते हैं। एड-ऑन एसेंशियल्स इज एन एड-ऑन ऑफ अराउंड 8-9 पैकेजेस, जो कि दे आर लाइक एसेंशियल्स। तो वी विल गो थ्रू देम कि वो क्या करते हैं, वो क्या फीचर्स हमें देते हैं। और दो फाइल होता है डॉट स्टोरी बुक के अंदर, एक है main.js, दूसरा है preview.js। तो आप अगर स्टोरी बुक को देखो ना, तो स्टोरी बुक का एक फ्रंट एंड साइड है जिसको आप प्रीव्यू बोलते हैं, और एक उसका सर्वर साइड है जो कि यू नो बिहाइंड द सीन्स जो कंस्ट्रक्शन वो करते हैं, जो फाइल्स वो पढ़ते हैं, एंड दे फॉर्म अ फ्रंट एंड। सो बैकएंड से रिलेटेड, सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस मेन में होता है, और प्रीव्यू से रिलेटेड, फ्रंट एंड से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो प्रीव्यू में होता है। ये सब क्या है हम देखेंगे। ये जो यहाँ पे एक्शंस लिखा है, इसका मतलब कोई भी अगर प्रॉप ऑन से शुरू होता है, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट एटसेट्रा, तो वो हमें एक उसका बड़ा अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन देगा। और अगर ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन से ये मैच कर रहा है कि अगर बैकग्राउंड या कलर मैच होता है कोई भी वैल्यू से, या कैपिटल डेट, अगर बैकग्राउंड या कलर मैच होता है, सो इट विल गिव अस अ कंट्रोल लाइक अ डेट, राइट। कलर, तो वो हमें कलर पिकर देगा, और अगर डेट होता है तो वो हमें डेट पिकर देगा। तो उस चीज के लिए ये एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे लिखा गया है। अगेन यू डोंट नीड टू know this as a beginner, but still आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो एड-ऑन्स है वो बताए गए हैं, और कौन कौन से फाइल्स को हमें स्टोरीज कहाँ कहाँ ढूंढना है, ये सर्वर को, स्टोरी बुक के सर्वर को वो बताया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज उन्होंने जो किया है वो है, अगर आप package.json फाइल में देखेंगे तो आपके लिए दो नए स्क्रिप्ट ऐड कर दिए गए हैं। तो आप अगर स्टोरी बुक या स्टोरी बुक या npm रन स्टोरी बुक करते हैं तो आप स्टोरी बुक देख सकेंगे लाइव प्रीव्यू में, और आप अगर बिल्ड स्टोरी बुक करते हैं तो आपके लिए स्टोरी बुक द पब्लिक डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगा, विच कैन बी एक्सपोर्टेड एंड यूज्ड और होस्टेड समवेयर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब
क्या करते हैं इसमें, हमें बटन्स का एक स्टोरी बुक बनाना है। I'll open the code here. हमें बटन्स का एक स्टोरी बुक बनाना है। तो उसके लिए बेसिकली हम सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। यूजुअली कंपोनेंट्स के साथ ही रखते हैं, कंपोनेंट से संबंधित सारी चीजें। वी कैन गेट रिड ऑफ दिस CSS इजीली। न्यू फाइल, and we can name this file button.stories.jsx. okay, इसमें फिर हम रिएक्ट और बटन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे। we'll import react, we will import button, और फिर ये स्टोरी बुक जो है ना, या दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्टली कोई भी लेसन्स में ये नहीं बताते हैं, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें आप देखोगे दो तरह के एक्सपोर्ट्स है, एक तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है और दूसरा है एक नेम्ड एक्सपोर्ट। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो हो गया, आप समझ लीजिए आपका मेन कंपोनेंट, मेटा इंफॉर्मेशन, और जितने नेम्ड एक्सपोर्ट्स है वो सारे हो गए, मान लीजिए वेरिएशंस, वो सारे हो गए आपके स्टोरीज। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स और वेरिएशंस और स्टोरीज। ठीक है, तो सबसे पहले डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में हमने यहाँ पे दिया /example/button। ये क्या करते हैं हम अभी देखेंगे। और कौन सा कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, हम बटन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार के लिए I'll get rid of the named exports, and बस इतना करके हम सेव करते हैं। and what we'll do is we will run yarn storybook। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टोरी बुक का बैकएंड, राइट, स्टोरी बुक का main.js कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके it is building up storybook for us। हाँ, ये URL में ऑलरेडी बटन स्मॉल दिखा रहा है क्योंकि पहले सिलेक्टेड था, जिसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। तो ये बता रहे हैं कि इन्हें कुछ स्टोरीज नहीं मिल रहा। ओके, सो लेट्स गो टू the storybook documentation and let's see कि एक सिंपल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो एक तो task.js है, फिर उसके स्टोरी बनाने के लिए task.stories.js, ये नाम वो एक्सपेक्ट करता है हमसे। और यहाँ पे हमने बटन डॉट स्टोरीज डॉट JSX भी काम तो करना चाहिए, पर it doesn't seem to be working। Okay, now if I uncomment the template and one of the named exports, इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही एक्सीलेंट है।
एंड ऑल्सो आई चेक कि ये कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, सोर्स के अंदर कहीं भी stories.js उसे मिल जाए या JSX मिल जाए। सो यहाँ पे stories.js हम उसे दे रहे हैं, सो आइडियली उसे ये मिल जाना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी बुक ये पूरा बन रहा है, आप ये कंप्लीट एक जो लाइव डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, उसमें अभी तक हमने केवल इतना ही किया है, हमने स्टोरी बुक इंस्टॉल किया यूजिंग द कमांड जो कि उनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है npx storybook init sb init। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया हमने जो बटन हमें डेमो करना था, जो बटन हमें स्टोरी बुक में हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट करना था, हमने उस बटन को इंपोर्ट किया और एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हमने, जिसमें हमने टाइटल दिया example/बटन। तो आप यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल के अंदर बटन है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे और कुछ दे देते हैं कि मान लीजिए कि कंपोनेंट्स atoms/बटन, तो आप देखेंगे कंपोनेंट्स के अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर आपका बटन है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे टाइटल देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्टोरी बुक में स्ट्रक्चर बना देता है, सो दैट इट्स वेरी इजी टू ग्रुप थिंग्स। आपको जैसे चाहे एक ट्री स्ट्रक्चर में ग्रुप करना हो, आप अलग अलग कंपोनेंट्स को इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट दिखाना है, बटन दिखाना है। तो ये हो गया आपका मेटा इंफॉर्मेशन या एक्चुअल कंपोनेंट, मेटा इंफॉर्मेशन हो गया। फिर उसके बाद जो नेम्ड एक्सपोर्ट है, उसमें क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। सो बेसिकली आप जो है एक नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका कुछ भी एक नाम दिया आपने प्राइमरी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसमें आप एक फंक्शन बेसिकली आपको देना पड़ता है, और वो फंक्शन जो है में जो भी आर्ग्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आर्ग्स इसको मिल जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स जो भी हमें देना है, जैसे कि उसका मोड सेट करना है हमें प्राइमरी, उसका लेबल सेट करना है बटन, वो सब हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्राइमरी इज अ फंक्शन दैट टेक्स इन सम आर्ग्स एंड वो आर्ग्स को वो स्प्रेड कर देता है बटन पे, सो दैट हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शोकेस कर सके। समझ में आ रही है बात? लेकिन हम तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे, जैसे कि हम एक सेकेंडरी भी बनाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक सेकेंडरी कंपोनेंट बनाएंगे, और वो सेकेंडरी में जो है हमारा मोड सेकेंडरी रहेगा, राइट? तो इस तरीके से बार बार इस चीज को कॉपी करना इज नॉट अ वेरी feasible solution, right? तो हम क्या करते हैं, इसे एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, यूजुअली वी नेम इट टेम्पलेट, एंड देन जावास्क्रिप्ट का object.bind मेथड को यूज करके वी बाइंड इट टू एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, विच एसेंशियली मीन्स हम इस पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसका एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट डॉट बाइंड बेसिकली मीन्स आप मुझे इसका एक नया कॉपी बना के दे दो, दैट्स इट। सो लेट्स डू इट। तो हम बेसिकली यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को रिप्लेस कर सकते हैं विद टेम्पलेट डॉट बाइंड। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास स्टोरी बुक में क्या है। हम बटन्स में जाते हैं और प्राइमरी में जाते हैं और सेकेंडरी में जाते हैं।
तो हमने मोड दिया प्राइमरी, मोड दिया सेकेंडरी, और साइज भी दे देते हैं मीडियम, और इधर साइज भी दे देते हैं मीडियम, और सेव कर देते हैं। बट इसमें हमें लेबल पास नहीं हो रहा। जो लेबल पास होना चाहिए वो लेबल पास तो नहीं हो रहा अपने आप। पर ये देखिए, आप इस तरीके से जो है ना, यू कैन प्ले अराउंड कि आप अलग अलग वैल्यूज सेट कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग लेबल दे सकते हैं, है ना। स्टोरी बुक के अंदर यूजर खुद ही टेस्ट कर सकते हैं कि अगर एक बड़ा लेबल दिया जाए तो वो कैसा लुक देगा, है ना। सो एवरीथिंग कैन बी ट्राइड हियर, बट व्हाट वी वांट इज बाय डिफॉल्ट जो है ना, इसमें लेबल आना चाहिए कुछ जो हम सेट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे हम एक लेबल आर्ग्यूमेंट्स में जो भेज रहे हैं, वो लेबल यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। तो क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है वो हमें डिबग करना पड़ेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो बटन कंपोनेंट में अगर हम जाएं तो दे आर टेकिंग मोड, दे आर टेकिंग साइज, दे आर टेकिंग लेबल, LABEL, और वो लेबल को यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लेबल में मैंने एक सिंपल सा स्ट्रिंग भेजा है। सो आइडियली ये लेबल तो हाँ, तो प्रिंट होना चाहिए प्राइमरी में ये सारे आर्गुमेंट के साथ, सेकेंडरी में ये सारे आर्गुमेंट्स के साथ। एक बार मैं वापस रिबिल्ड कर लेता हूँ। हाँ, मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल रिबिल्ड किया और इस सेकेंडरी को सेकेंडरी किया, तो ये चल पड़ा। तो प्राइमरी बटन आप देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा सा प्रीव्यू मिल गया प्राइमरी बटन का। और ये जो कंट्रोल है, ये कंट्रोल कहाँ से आ रहा है वो भी हम देखेंगे, और यहाँ से हम काफी चीजें चेंज करके भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे मजे वाली बात यह है कि आप जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उनको बहुत इजीली शोकेस कर सकते हो। जैसे कि प्राइमरी बटन और सेकेंडरी बटन दे दिया हमने, फिर उसके बाद हम एक गोल्ड बटन दे देते हैं, और इस गोल्ड का मोड होगा गोल्ड। फिर हम इसमें पिंक, हमने एक वेरिएशन बनाया था, आपको याद हो अगर तो, हम एक पिंक वेरिएशन बना सकते हैं। और इस पिंक को हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें मोड इसका रहेगा पिंक। और अब अगर हम देखेंगे तो हमें ये चारों वैरायटी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर हम सीधा डॉक्स में जाते हैं तो सबसे मजे वाली बात यह है कि आपको सारे के सारे वैरायटीज स्टोरीज देखिए। बटन तो हो गया हमारा कंपोनेंट, राइट, मेटा कंपोनेंट, और उसके बाद उनके जितने भी, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, आप अगर उस भाषा में देखें तो। और ये सारी हो गई उनकी स्टोरीज, सेकेंडरी, गोल्ड, पिंक, ये सारे हो गए उनके स्टोरीज। और अब इसमें हम और भी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इन सबको कॉपी कर लेता हूं, और एक ही जगह हमारे कस्टमर्स, हमारे क्लाइंट्स इसको मैं कर देता हूं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल प्राइमरी। फिर ये स्मॉल प्राइमरी डॉट आर्क्स, इसमें मोड प्राइमरी रहेगा, लेबल यही रहेगा, साइज मीडियम के बदले इन तीनों में हम स्मॉल कर देते हैं।
या लार्ज कर देते हैं या स्मॉल कर देते हैं और इनको हम अलग अलग नाम दे देंगे बस। मैं स्मॉल भी कॉपी कर लेता हूँ सो दैट फटाफट कॉपी पेस्ट हो जाए। स्मॉल सेकेंडरी, स्मॉल गोल्ड, स्मॉल पिंक। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो बटन इसमें प्राइमरी सिलेक्टेड है, मीडियम सिलेक्टेड है, और ये सारे के सारे वेरिएशंस ये हो गए नॉर्मल पिंक बटन, ये स्मॉल प्राइमरी, स्मॉल सेकेंडरी, स्मॉल गोल्ड, स्मॉल पिंक, राइट। एक एक लिविंग डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाता है। कोई भी नए प्रोग्रामर्स आए, डेवलपर्स आए, तो दे आर एबल टू इमीडिएटली आइडेंटिफाई they are immediately able to identify कि you know हमारे हमारे वेबसाइट में, हमारे एप्लीकेशन में कितने सारे वेरिएशंस ऑफ बटन्स हैं। एंड अगर उनको यूज करना है, मान लीजिए उनको ये गोल्ड बटन यूज करना है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें क्या कोड लिखना है? दे कैन जस्ट क्लिक ऑन शो कोड एंड ये आप देखेंगे कि उनको पता चल गया कि केवल उन्हें ये कॉपी पेस्ट करके डालना है। बटन एलिमेंट है जिसका लेबल बटन है, मोड गोल्ड है, और ऑन क्लिक हैंडलर वो कुछ भी दे सकते हैं। एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत सुंदर है। स्टोरी बुक बहुत कॉमन है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज यूज करते हैं स्टोरी बुक को टू मेंटेन देयर लिविंग स्टाइल गाइड और लिविंग डिजाइन सिस्टम। इसको लाइव डिजाइन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एग्जैक्टली ये जो कंपोनेंट हम ऐप में यूज करने वाले हैं, एग्जैक्टली उसी ऐप को ये स्टोरी बुक यूज करता है। ऐसा नहीं कि स्टाइल गाइड कुछ अलग है और एप्लीकेशन में कुछ और यूज हो रहे, नहीं। We are using exactly what we are supposed to use in the application in our style guide. So that makes it a living style guide, एक live style guide. It's never going to be much out of dated with the with the actual components. और हमें करना इतना ही है कि हम अलग अलग arguments हमें देके variations named export बनाते रहना है। That's it. ठीक है। फिर स्टोरी बुक में हमने देखा कि जो सबसे मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो main.js में रहता है और preview.js में रहता है। अगर हमारे कंपोनेंट्स में कलर वगैरह होंगे तो हम इजीली उसे एक्सपीरियंस कर सकेंगे। लेट्स ट्राई दिस आउट, ठीक है, कि ये बैकग्राउंड कलर अगर हम दे तो वो कैसा 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 लगता है। सो विल गो टू बटन कंपोनेंट और इसमें हम एक और प्रॉप पास कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉप टाइप्स में वो हम डिफाइन कर देते हैं कि background color can be prop types dot string। एक बैकग्राउंड कलर हम पास कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर का डिफॉल्ट वैल्यू हम नल रख देते हैं, राइट। कि अगर बैकग्राउंड कलर पास नहीं किया गया है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इसको हम नल कर देते हैं। कि हमने कुछ वैल्यू से बाय डिफॉल्ट हमने नल वैल्यू दिया है। और props में we will pass on the background color और background यहाँ पे हम दे देते स्टाइल, और स्टाइल में no, let's not pollute our component this way। component को हम
ऐसे साफ सुथरा रहने दें, तो ये लॉजिक हम अपने स्टाइल्ड कंपोनेंट में हैंडल करेंगे। सो बैकग्राउंड कलर को हम सीधा स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को हैंडल करने देंगे। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे पास ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि अगर बैकग्राउंड कलर पास किया गया है, सो वी विल ओवरराइड इट। ओके, सो अगर बैकग्राउंड कलर है, इसको अगर बैकग्राउंड कलर है, so what we can do is simply like this. अगर props dot background color है, तो फिर we will pass on the background color, else we will return null. Okay, props dot background color or will return null. Let's see what happens now. इसको अगर हम सेव कर दें, और अपने स्टोरी बुक में अगर हम देखें, कोई भी एक में चले जाते हैं, हम मान लीजिए प्राइमरी में चले जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेट मी रिफ्रेश द पेज। यहाँ बैकग्राउंड कलर का भी एक सेक्शन है, ठीक है, और ये बैकग्राउंड कलर से मैं बैकग्राउंड कलर चूज कर सकता हूँ लिटरली। आई कैन लिटरली सेट इट टू एनीथिंग। देख रहे हैं आप? तो ये रेड कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। सो क्योंकि बैकग्राउंड कलर नीचे आ रहा है, जब तक वो नल था तब तक कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा था उसका, लेकिन जैसे ही हमने सेट किया कुछ भी कलर, दैट गॉट ओवररिडन। एंड क्योंकि main.js में हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जब भी कलर या बैकग्राउंड अगर यूज्ड हो, हाँ, तो फिर एक कलर पिकर दिखाना है, दैट्स अ कलर कंपोनेंट दैट इज स्पेसिफाइड देयर, वी जस्ट सो दैट, राइट। और अगर हम इसको ओवरराइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक मान लीजिए स्टाइल्ड कंपोनेंट्स में हम जाते हैं, ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं है। एक बार हमारे पास अगर हम ऐप में जा भी नहीं रहे ये सब चेक करने, राइट, ऐप तो यहाँ पे यूं ही पड़ा है, ये सारी टेस्टिंग हम स्टोरी बुक के अंदर ही कर रहे हैं। और अब स्टोरी बुक के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि stories.js जो फाइल है, इसके अंदर एक रेड बटन बना सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। सो आई कैन मेक रेड बटन, मान लीजिए, एंड रेड में जो आर्ग्यूमेंट्स जाएगा उसमें मोड देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर ओवरराइडिंग द कलर एनीवे। या फिर मोड हम दे सकते हैं, क्योंकि कलर जो है वो उस पर डिपेंड करता है ना। सो मोड कैन बी एनीथिंग, और बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं रेड, मान लीजिए। और अब मैं अगर इसे सेव करूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड वेरिएशन है, एंड दिस इज रेड, राइट। तो हम ये रेड बैकग्राउंड कलर में ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर आप देख सकते हैं तो। अमेजिंग, इजंट इट? वेरी पावरफुल। हमने अभी अभी एक नया प्रॉप्स ऐड किया, एंड वी हैव कंट्रोल्स एंड एवरीथिंग फॉर दैट इनसाइड ऑफ आवर स्टोरी बुक। मुझे वन ऑफ द जो बेस्ट फीचर्स लगते हैं वो डॉक्स लगता है, कि एक
विदाउट मच एफर्ट्स एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमारे पूरे टीम को मिल जाता है, and they can see the code and they have the idea of how to use this particular component in their own project. So it's really awesome that way. और इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है स्टोरी बुक का बहुत ही लाजवाब है. सो इसमें आप डॉक्स में जा सकते हैं, and here you have almost all the information that you will need to make great storybooks. और एड-ऑन्स में अगर आप जाए ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे एड-ऑन्स है जिससे कि आप स्टोरी बुक के फंक्शनैलिटीज को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. और उसमें जो एसेंशियल्स हमने देखा था, दैट इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 एड-ऑन्स का वो एक ग्रुप है कॉल्ड एसेंशियल्स. और ये प्री इंस्टॉल्ड होता है आपके लिए, सो दैट आपको एक जबरदस्त एक्सपीरियंस मिल सके. एक्शंस क्या होता है, जैसे कि आप अगर प्राइमरी में जाते हैं, आई विल रीसेट इट कि वो वापस प्राइमरी हो जाए. यहाँ पे रीसेट बटन है, और आई विल गो टू कैनवास, और अगर मैं बटन में क्लिक करता हूं तो आप देखिए एक्शंस में क्लिक इवेंट आता जा रहा है, राइट? तो ये बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि एक्शंस में जो है जहां भी वो ऑन एनकाउंटर करता है, ऑन क्लिक जैसे, तो वो हमें उस एक्शन को देता है, और उस एक्शन के संबंधित उस इवेंट की पूरी जानकारी हमें स्टोरी बुक के अंदर ही मिल जाती है. कि बटन हम जब क्लिक कर रहे हैं तो एक ऑन क्लिक इवेंट रेज हो रहा है जिसका टाइप क्लिक है, और पूरा डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाता है एक अच्छा सा, राइट? तो उसके लिए हमें क्लिक इवेंट, कोई भी इवेंट्स या कोई भी हैंडलर्स जो ऑन से शुरू होता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा उसके लिए कंसोल ओपन करने की जरूरत नहीं. उसके एक्शंस को हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके लिए ये एक्शंस प्लगइन होता है. दूसरा है व्यू पोर्ट. अब व्यू पोर्ट के लिए आप देखेंगे व्यू पोर्ट क्या करता है. मैं अगर होवर करूं तो यहाँ पे इट गिव्स अस स्मॉल, मेरे ख्याल से ये एक व्यू पोर्ट का काम है शायद. I'm नॉट 100% श्योर, बट शायद ये व्यू पोर्ट का काम है. इसी तरीके से डॉक्स, राइट? तो ये जो डॉक्स आप यहाँ पे देखते हैं, एक समरी जो आ जाता है यहाँ पे, ये पूरा सेक्शन जो है ना यहाँ पे कैनवास के बाद, ये लगभग एड ऑन से आता है, ठीक है? और ये कंट्रोल्स है, ठीक है? पहले डॉक्स का ये जो अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन, एक सिंगल पेज जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है ना आपके सारे वेरिएशंस का, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर्स ऑफ स्टोरी बुक इन माय ओपिनियन. ये डॉक्स एड ऑन से आता है. कंट्रोल्स अगेन दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल. जब आप कैनवास में होते हो डिफॉल्ट में, तो आपको ये कंट्रोल्स मिल जाता है जिससे कि आप अलग अलग प्रॉप्स को ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हो, एंड यू कैन एक्सपीरियंस कि ये सब चीजें चेंज करके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप ऑन द स्पॉट ट्राई कर सकते हो. ये तो एक बड़ा सिंपल कंपोनेंट है, राइट? देयर कैन बी लाइक मेनी मोर मेनी मोर थिंग्स टू इट. अगेन एक चीज आप सोचेंगे कि ये कैसे स्टोरी बुक को पता चल जाता है ये सारे प्रॉप्स है. तो ये पता चलता है प्रॉप टाइप्स से. तो जब भी हम प्रॉप टाइप्स यूज करते हैं ना, तो इससे इट गेट्स एन आइडिया कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, गोल्ड, पिंक, ये ऑप्शंस कहाँ से पता चला स्टोरी बुक को. तो ये स्टोरी बुक को पता चलता है प्रॉप टाइप्स से. जो भी प्रॉप टाइप्स डिक्लेरेशन हम करते हैं, स्टोरी बुक उससे
it extracts the relevant information. Amazing. तो फिर उसके बाद कंट्रोल्स हमने देख लिया है ना. फिर बैकग्राउंड्स, आप अलग अलग बैकग्राउंड स्विच कर सकते हो विच इज एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट. सो आप लाइट में देख सकते हो, आप डार्क बैकग्राउंड में देख सकते हो ये कैसा लुक आ रहा है, राइट. सो दिस इज एडेड बाय दिस पर्टिकुलर एड-ऑन. टूल बार्स हम देखेंगे फिर कभी. मेजर और आउटलाइन ये भी काफी यूजफुल एड-ऑन्स है. तो आप चीजों को बड़े इजीली मेजर कर सकते हो. So this is a very useful thing for QA people as well as designers. And फिर outlines आप दे सकते हो चीजों को. So you can give nice outlines to things. So that way, आपको सब चीजें अच्छे से समझ आती है, सारे outlines वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे. So ये सब कुछ built-in add-ons होते हैं. आज हमने पहले तो एक बटन और उसके कुछ वेरिएशंस बनाए प्योर रिएक्ट में, राइट. कोई कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ यूज नहीं किया. और फिर हमने देखा कि इट्स अ पेन टू showcase the buttons to our clients or to discuss it with our peers or to explore कि क्या क्या possibilities है. और बहुत सारे जैसे जैसे वेरिएशंस बढ़ते जा रहे थे, हमारा कंपोनेंट भी जो है, जो हमारा मेन कंपोनेंट है, वो भी बहुत गंदा होता जा रहा था. उसमें भी बहुत सारे लॉजिक्स आ रहे थे एक्सेट्रा. तो हमने क्या किया कि स्टाइल से संबंधित सारे लॉजिक को बाहर कर दिया. एंड हमने स्टाइल्ड ऑब्जेक्ट जो कि स्टाइल्ड कंपोनेंट से आया मिला हमें, उसमें हमने बटन एलिमेंट को यूज करके ये कुछ स्टाइल्स दिए बेस. और फिर उसके बाद कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, पैडिंग वगैरह को हमने डायनामिक बना दिया, जिसमें कि हमने props के हिसाब से we were passing values to it. So depending on the props, we were passing background color. Depending on the props, we were passing font size. Depending on the props, we were passing padding and background, right? So हमने styled components को use किया in order to theme it. तो हमें फिर CSS की कोई जरूरत नहीं पड़ी. We were easily able to get rid of the CSS. मैं project में इसलिए छोड़ देता हूँ कि आपको काम आ जाए अगर आपको explore करना हो तो. एंड वी कैन सी दैट हमारा कंपोनेंट अपने आप में कितना साफ सुथरा और सिंपल हो गया. ठीक है. अगेन स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को नीट एंड क्लीन रखने के लिए आई क्रिएटेड अ कपल ऑफ यूटिलिटी फंक्शन और हेल्पर फंक्शंस कि वो प्रॉप के हिसाब से जो उसको इनपुट मिल रहा है, इट विल गिव अस अ रीजनेबल आउटपुट. तो फ्यूचर में भी जब हमें लॉजिक चेंज करना हो तो यहाँ पे हम बड़ा इजीली डिपेंडिंग ऑन हमें क्या प्रॉप्स मिल रहे हैं, वी कैन चेंज द लॉजिक हियर. सो इट्स वेरी इजी टू मैनेज दैट वे. यूजुअली क्या करते हैं कि हाँ, बटन स्टाइल्ड कंपोनेंट यूटिलिटीज करके एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना के ये सारे वहां से भी यूटिलिटीज ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपको इसको कंपोनेंट से बाहर करना हो, एंड यू कैन इंपोर्ट एंड इजीली यूज इट. सो दैट इज आल्सो वन पॉसिबिलिटी. तो ये हमने सबसे पहले ये काम किया कि हमने थोड़ा कंपोनेंट को साफ सुथरा किया और स्टाइल्ड कंपोनेंट्स हमने यूज किया इन ऑर्डर टू स्टाइल इट. और उसके बाद हमने स्टोरी बुक्स बनाने के लिए स्टोरी बुक्स को इनिशिएट किया और हमने button.stories.js बटन कंपोनेंट के अंदर ही बनाया. और इसमें दो तरह के एक्सपोर्ट होते हैं. एक तो होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट. तो नेम्ड एक्सपोर्ट में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मेटा डेटा. तो उसमें हम टाइटल देते हैं कि वो कंपोनेंट अपने ट्री में कैसा दिखेगा और उस कंपोनेंट का वो कौन से कंपोनेंट को यूज करेगा, राइट. सो इट्स गोइंग टू यूज द बटन कंपोनेंट. फिर उसके सारे वेरिएशंस के लिए हमने पहले तो एक टेम्पलेट बना दिया जिसमें कि हम उस बटन को आर्ग्यूमेंट्स पास कर सके. और फिर हम उस टेम्पलेट की नई नई कॉपीज बना रहे हैं. For example, we are creating a copy of the same template called primary और उसको different arguments दे रहे हैं.
वी आर क्रिएटिंग अनदर कॉपी सेकेंडरी और उनको हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं और हमें केवल कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ा इस तरीके से। सो इनिशियल सेटअप पे थोड़ा सा एफर्ट था, फिर हमने देखा कि बाद में जैसे जैसे हम नए वेरिएशंस ऐड कर रहे थे, इट वाज रियली सिंपल टू मैनेज इट और हमें एक लिविंग स्टाइल गाइड इस तरीके से मिल गया जिसमें कि हम सारे वेरिएशंस को एक पेज में देख सकते हैं और क्या कोड यूज हुआ है उसको इजीली हम प्रीव्यू एंड कोड दोनों को हम देख सकते हैं एंड इजीली कॉपी करके फिर हम अपने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी ऐप है, जहां भी हमें इसे यूज करना है वहां पे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सिंपल वे में जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता था स्टाइल्ड कंपोनेंट्स को और स्टोरी बुक को, मैंने सिंप्लीफाई करके आपको ये एग्जांपल बताया। दिस इज वेयर मिनिमम, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। आप इतने में कंफर्टेबल हो जाइए एंड देन टेक हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन to get much deeper into first styled component, second storybook. And if you want me to take further master classes specifically on styled components, कि styled components में आपको एकदम डेप्थ में जाना है तो आप कैसे जाएंगे, स्टोरी बुक के और डीप में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे, I'll be very happy to conduct a session. I hope you found this session useful. This is very important as you work in larger, you know, लार्जर प्रोजेक्ट्स। और आपके रेज्यूमे में अगर आप थोड़ा सीख कर आप ऐसा लिख देते हो कि यू आर फैमिलियर विद स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इन स्टोरी बुक, इट गिव्स यू एन एज, राइट? सो या प्लीज प्रैक्टिस इट, प्लीज गेट कंफर्टेबल विद जितना हमने आज किया। यू शुड बी एबल टू डू दिस मच ऑफ वर्क by yourself, okay? फिर इसके बाद you can build upon more and more and more skills around storybook and style components. एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि Storybook is not dependent on styled components. They are two different topics. अगर हमने styled component में refactor किए बिना भी अगर हम storybook बनाते ना, वो बन जाते हैं, right? So storybook is not dependent on styled component, but it's a very good practice की, I won't say a very good practice, but it's a very common practice कि usually styled components are used to style React components and Storybook is used to create a living style guide for that. Thank you very much. Have a great week ahead. See you again next week.